Okay, let's start the class. So this is the second lecture of our PYQ, right? And think so in the last class we have discussed about these topics that I have mentioned, right? That is laws of motion, conservation of momentum, center of mass, laboratory frame, elastic and elastic collision, equation of motion, conservation theory of energy and momentum. So UPSC is not asking much question from these two topics, right? Now today we will be more focusing upon this system of particles and center of mass and this Rutherford scattering, right? In last 10 years, how the question has been evolved, that we will see. Now, let us start with that. So till question number 7, we have done in the last class, right? Today we will be going to start with the 8. Now, if you see the question number 8, right, it is nothing but the center of mass of two system, two masses, 2-point masses. This question is also 2-point masses. And this question is of simple integration. If you move on to the next one, here they have asked again two masses, and here again uniform solid sphere, that is our symmetrical bodies, right? So if you will see the trend of center of mass, you will analyze that they don't ask question from the motion of center of mass, right? All those things, they just literally ask you about finding out what is the center of mass either of two particle system or of uniform shapes like hemisphere, semi-ring, semi-disc, all those like that. Hai na? And next one is integration based question like this thing. Non-uniform, if they are asking, they are asking on the rod. So very easy type of question they are asking from the center of mass. No, nothing challenging here. Now, next topic that we will going to do today is the Rutherford scattering. If you see that, just see these questions. Are all these questions we have done in the derivations? जितने भी क्वेश्चंस है कि all are our derivations. Discuss the problem of Rutherford scattering of charged particle by a Coulomb field, hence obtain expression of Rutherford scattering cross section. What is the importance of our expression? 14. Draw neat diagram to explain the scattering of an incident beam of particles by a center of force. Show that differential cross section area is something like that. So that cross section area of elastic scattering of a point infinity is r square by 4. This is what hard sphere scattering that we have studied. So if you analyze from here to here, they are asking only derivation type of question, right? Now you need to understand. So we cannot mindlessly do numericals in Rutherford scattering. समझ में आ रहा है? हमें कहाँ किस चीज पे ध्यान देना है? That is very, very important to understand. Okay. Now, one more notice to everyone, right? If anyone would like to join this course, right? Please use this link bit.ly/physics optional PYQ solve. This is the, even in the description you will get the link. And again, PDF will not be circulated on the Telegram. PDF will be available only on the website. I want only serious people to attend the classes and get benefit from this thing. Okay? PDF collector, I don't want those guys. Okay? Chalo. Let us start with the solution. In the last class, we have done till 7 number question. Let's start with the question number 8. So question number 8 is telling us this thing, that the distance between the center of carbon atom in the carbon monoxide molecule is 1.130 into 10 to the minus 10 meter. Locate the center of mass molecule related to the carbon atom. Find the center of mass of homogeneous plate. Now in 10 marks, they have asked two questions. So we have a very, very limited scope of space to write it, right? So how will you write it? We will write the definition of center of mass. What is center of mass? It is an imaginary point in space where total mass is concentrated. Total mass means inertia is concentrated. Inertia simply means that translational motion of that body can be easily judged just by seeing the translational motion of the center of mass. This is what this definition means, right? Now coming to the first question, it is
regarding the carbon monoxide gas molecule, right? So if it is carbon monoxide gas molecule, it will have carbon and oxygen, one carbon and one oxygen. So how we write it? Writing of the formula is very, very important, right? Here we don't need to describe anything. इसके पीछे कोई derivation करने की जरूरत नहीं है. You can directly write the center of mass formula. Center of mass formula for discrete system given as R center of mass is summation this thing. Now, again, you have to declare all the variables. या फिर write symbols has their usual meaning. Now, considering their center lie on the x-axis, these centers lying on the x-axis. So what we required? We just required x center of mass. ये तो सबको आता है. M1 R1 into M2 R2. M1 R1 is 0 plus 16 AMU R 12 plus 16 AMU. ठीक है? That is, if you solve it, it is coming out to be 6.45 into 10 to the power minus 11 meter. Now, if you see that here, this carbon is 12 AMU and oxygen is 16 AMU. That means it is heavier than this thing. That means center of mass is shifting towards the heavier one. That you can conclude it. That is, center of mass is lying at a distance of 6.4 from the carbon atom. Also, x center of mass is what? Greater than R by 2. Whatever the R was given there. So center of mass shifted towards the heavier atom. इससे ज़्यादा scope नहीं है इसमें लिखने का. Right? Now, some of you may say that can we write the application of center of mass? You don't have that space there. ठीक है? समझो चीज को. Now, when the questions are given of 10 marks and इनमें दो पार्ट है, तो ट्राई की फर्स्ट पार्ट पेज 1 में खत्म हो जाए और सेकंड पार्ट पेज 2 में खत्म हो जाए. ठीक है, कोशिश करेंगे ऐसा हम लोग. Now coming to the homogeneous semi-circular plate. If it is a plate, it has to be some area, right? How we do that? Now center of mass of continuous mass system is given as this, where R is what? Center of mass of elemental length. How we take the element? R पर जाकर एक रिंग ले लेंगे dr का. R पर जाकर एक लेंथ एलिमेंट ले लेंगे dr का, right? Now this is what we are talking about the last classes. Figure 2. इसी क्वेश्चन में फिगर 1 बनाया हमने, इसी क्वेश्चन में बनाया हमने फिगर नंबर 2. So just I am labeling it. It's again it's a very, very optional thing to do. ठीक है. Now considering elemental mass of dm at a distance r from the center has width dr. तो जो हमने ये ऐसे किया है ना, please one thing we have to show in the figure. Again you have to write this also. ये लिखना होता है, right? As plate is uniform, so we can say that कि there dm by pi r dr equals to m upon pi a square. यही तो होगा. इसकी एरिया कितनी होगी सेमी वाले की? इसकी लेंथ कितनी है? पाई आर. इसकी विड्थ कितनी है? dr. So pi r into dr will be the area. So if you do that, dm is coming out to be 2m upon a square r into dr. So what we will do? We will integrate it. Now before integrating it, try to understand one thing, that what is the center of mass? Center of mass is an imaginary point in space. Remember this thing. If you are writing point in space, it should have both the coordinate. If it is a planar, it should be x, y. Agar it's a 3D, it should be having x, y and z. समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सेंटर ऑफ मास कई बार हम क्या करते हैं कि x को लिखते ही नहीं है. x की फॉर्मूला को लिखोगे और x 0 है इसलिए 0 है. That you have to mention it here. Now coming to the y, can we put directly y is equals to 2r by pi? या इसको हम लोग ड्राइव करेंगे? अगेन डिपेंड्स. सिर्फ अगर ये क्वेश्चन आया होता, फाइंड आउट सेमी सर्कुलर प्लेट and it was asked for 15 marks, सिर्फ सिंगल दिस क्वेश्चन, it was asked for 15 marks, then we have to derive this one also, 2r by pi. But as we have no space to write, so we can consider it. ठीक है. So what we इंटीग्रेशन में देखो क्या होगा, 2m by a square बाहर आ जाएगा, r y square, ये सिंपल इंटीग्रेशन है. It is coming out to be 4a by 3 pi. So again we can write that center of mass lying on the axis of symmetry. देखो कैसे हमने कंक्लूड किया है. फर्स्ट वाले को इंटरप्रेट कर दिया एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड सेकंड वाले को कर दिया हेवियर साइड ऑफ द प्लेट, दैट इज 4a by 3 pi. इफ दिस इज द प्लेट, हेवियर साइड विल लाई ये r by 2, ये r by 2, तो नीचे वाले हिस्से पे लाई करेगा, व्हिच इज व्हाट इट इज, राइट. कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखने की, कोई भी एक्स्ट्रा लिखने की पॉसिबिलिटी यहां पर नहीं है. समझ में आया सबको? यस, नो? If you have any doubt, please ask.
चलो, now coming to this question you have to understand how you will conclude it. Interpretation is more important than the question itself. Question तो बहुत ही छोटा है, ठीक है? So a diatomic molecule is given, ठीक है? A diatomic molecule is given M1. Here you should have to write diatomic molecule. So for diatomic molecule, what we are considering, there will be two masses, M1 and M2, right? Again, the same formula will be applied here. Now, how will you write that? If you consider like this, it will be coming out to be M1R upon M1 M2. No, again, understand this question. This question asks for 15 marks. तो हमें 3 पेज लिखना ही होगा. You have to write 3 pages. Are you getting it? You have to write the 3 pages here. Now, center of mass. यहां तक सबको समझ में आ रहा है? It will be M2R by M1 plus M2. Now, how will you fill up the pages? If this is the case, we can make two cases. If M1 equals to M2 equals to M, तो M डालेंगे तो क्या आ जाएगा? X centimeter equals to R by 2. If both masses are same mass, it will lie on the center. We will use the cases. If M1 by M2 is much greater than this, then center of mass equals to X. That is, it is coinciding with the heavier mass. Example: sun in solar system, nucleus in atom. Are you seeing this? कि सिर्फ 3 पेज में भरने के लिए हमने ये पूरा का पूरा जो है वो एनालिसिस इस वाले आंसर का कर दिया है एक्स्ट्रा. यस और नो? प्लीज रेज योर हैंड इफ यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग, कि हम कैसे यूटिलाइज करेंगे स्पेस को, 3 पेजेस को कैसे यूज करना है, कैसे कंप्रेस करेंगे, कैसे एक्सपैंड करेंगे. ठीक है? वी कैन नॉट कंप्रेस और एक्सपैंड जस्ट बाय राइटिंग द वर्ड्स और इंक्रीजिंग द फॉन्ट. वी हैव टू राइट समथिंग सब्सटेंशियल. ठीक है? नाउ coming to this, also I have written that the translational motion of diatomic molecule can be observed just by observing the translational motion of its center of mass. We know that translational motion of any body is what? Equivalent to the translational motion of center of mass. तो एक लाइन ये भी लिख के हमने डेढ़ पेज तो यूज कर लिया, क्योंकि why we have used डेढ़ पेजेस, because 15 मार्क्स का था. ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकेंड पार्ट है, एंड यहां से दिख रहा है कि सेकेंड पार्ट भी छोटा है. तो अगर तुम एक पेज में खत्म कर दोगे फर्स्ट पार्ट को, तो दूसरे पेज में सेकेंड पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर तीसरे पेज में सिर्फ बकवास लिखोगे. समझ में आ रहा है? सो वी हैव टू मेक अ फ्लो ऑफ द आंसर आल्सो. ठीक है, हमने फर्स्ट पार्ट किया, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सटेंडेड लिख दिया, फिर सेकंड स्टार्ट किया, फिर थोड़ा एक्सटेंडेड लिख दिया. नहीं तो क्या होता है कि 1 में पहला खत्म, 2 में दूसरा खत्म, तो थर्ड वाले में तुम अगर एक्सटेंड करोगे तो इररिलेवेंट दिखना स्टार्ट हो जाता है. राइट? आई विल शो यू हाउ. Now coming to this one, moment of inertia through C1. Moment of inertia पहले define करेंगे, is defined as the resistance offered by a body to change its rotational motion. ठीक है? Considering here R1 is equals to R2. Now we have also find out R1 and R2 from the above one. ऊपर निकाला था हमने ये. What is R2? R1 minus R2. Now let us consider y dash y axis passing through C1 and perpendicular to R. तो ये सब चीजें लिखनी होती है. Why I am telling you, if you just ignore the video and just start reading my answer, तुम्हें ये सब पता पढ़ोगे तभी समझ में आएगा पूरी की पूरी चीजें. It will make the flow of reading an answer. The moment of inertia of a mass at a distance a from x is given as ma square. So I is equal to what here? M1 R1 square plus M2 R2 square. What is R1? R1 is M2 R upon M1 plus M2. M1 R upon M2 plus M2. दोनों का होल स्क्वायर करो तो क्या होगा? M1 M2 कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या बचेगा? M2. यहाँ क्या बचेगा? M1. तो M1 plus M2, नीचे क्या है? M1 plus M2 का होल स्क्वायर कट के क्या आ जाएगा? दिस थिंग. नाउ M1 plus M2 is what? Mu, reduced mass, mu R square. So जो हमें प्रूव करना था, this thing, that prove that it is mu R square where mu is equals to 1. We have proved it. कहाँ प्रूफ किया हमने? थर्ड पेज में प्रूफ किया है. थर्ड पेज की स्टार्टिंग में ही प्रूफ हो गया है. अगर हम लोग नहीं लिखते ये आधा पेज, समझ रहे हो, तो सेकेंड पेज में ही खत्म हो गया होता. दिस इज important. Now what we have to do here, we have come across 3 things: center of mass, reduced mass, and moment of inertia. So we have to play along this thing. अब ऐसा नहीं center of mass की application लिखना start कर दो. ठीक है?
रिड्यूस मास की एप्लीकेशन लिखना स्टार्ट कर दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एप्लीकेशन, ठीक है, यू कैन राइट दिस अगर तुम्हारे स्पेस और टाइम लेफ्ट है, बट दीज आर सेकेंडरी. फर्स्ट थिंग इज टू फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन देम, राइट? सो अंडरस्टैंड हाउ आई हैव written this thing. Even if the body is doing trans-rotational motion, why? Because हम लोग यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? Rotational की. Motion will be pure rotational from the center of mass frame. समझ में आ रहा है? So I am just what? Moment of inertia और center of mass. मतलब एक rotational, एक translational. इन दोनों को connect करने की कोशिश कर रहे हैं from this one. If the net force acting on the above diatomic molecule is zero, then it will rotate about an axis passing through the center of mass. Same. रोटेशन एंड सेंटर ऑफ मास वी हैव कंबाइंड इट. समझो यहां पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि रैंडम आ रहा है, एवरीथिंग इज थॉटफुल व्हाइल राइटिंग इट. नाउ हियर द कंप्लीट सिस्टम कैन बी टेकन एज अ सिंगल mass of mu at a distance r from rotational axis to discuss the rotational motion. Why? Because we have defined mu. What is the concept of mu? That it can be taken as r at a distance mu. So this small diagram, mini diagram in the conclusion will add it. Now as this question belongs to the center of mass mainly, so we'll write the application of center of mass क्योंकि हमारे पास स्पेस बच गया था. Even if you are not writing, कोई दिक्कत नहीं है. One thing you should understand, everyone, that him I am giving you model answer. Sometimes I write something extra. In video I will be discussing you कि कितना extra लिख सकते हो, कितना छोड़ सकते हो, कितना से impact नहीं पड़ेगा. Even if you don't write these things, it will not impact your answer. Trust me. Something I write so that you get some value addition for other answers also. So what is the application of center of mass? Understanding the orbits of celestial bodies, ensuring stability of the vehicles, analyzing the trajectory of the particles. So write like this one. इस तरीके से लिखने की कोशिश करोगे, एग्जांपल्स भी. Understood everyone? Understood? Yes, sir. अब देखो ये चैलेंजिंग है. This is a challenging question. This question you can solve in just 2 lines. बहुत ही आसान इंटीग्रेशन है इसका. yes or no? अरे x पर जाकर dx लोगे, lambda नॉट x by l into dx into x square dx का इंटीग्रेशन है. yes or no? It is a 2 line question. 15 मार्क्स में पूछ दिया है. और कब पूछा है? ऐसा नहीं कि बहुत पुराना है. It is from 2018, राइट? एटलीस्ट ठीक है 2013 2014 मान सकते हैं कि बहुत पुराना हो गया, 10 साल पहले का. बट जो लास्ट 5-6 साल का है, दे आर द ट्रेंड. There can become any pairing examination. So how will you write this thing in 3 pages? This is a real challenge in the examination. So how will you do that? पहले तो हम लोग अब इसको तो नहीं बड़ा कर सकते हैं. We cannot increase the definition. What we can do here, the center of mass of the rod is center of mass of conduction is given as this formula. ये रॉड का डायग्राम बनाया. क्या करते हैं हम लोग? x पर जाकर dx लेंगे. So we will write here everything that rod is along x-axis. Consider an element ds at a distance s from the origin, having coordinate s 0 0 and passing dm. I have already told you that center of mass is the point, and when you're writing the point, write x, y, z all the coordinates. Why the examiner has given x, y and z coordinate to the diagram? अगर सिर्फ x center of mass ही निकालना होता तो वो ये डायग्राम बनाता क्यों? समझ में आ रहा है? If UPSC ये सब हिंट देता है UPSC that how the student should think. If he is giving you y and z axis also, तो सीधा बोलते ना कि एक रॉड है, वो डायग्राम देता ही नहीं. Even if diagram is not given, can you solve this question? Yes or no? कर लेते ना, considering the length of the rod along x axis, y axis, z axis जो भी है. How many of you can solve this question without the diagram? How many of you solve the question without diagram? कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. Yes or no? UPSC why they are डायग्राम बनाने में पैसा लगता है. So no, so why they are doing this thing? So you understand कि y और z के बारे में भी डिस्कस करना है तुम्हें. So here we will write here. We know that dm, देखो पूरा मेरा जो फर्स्ट पेज है ना, सिर्फ डायग्राम बनाने से और ये लिखने से खत्म हो गया. सेकंड पेज आई एम राइटिंग dm लैम्डा. थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा, कोई मजबूरी है हमारी, है ना. लैम्डा नॉट s into ds. So around 30% of the pages I have done this calculation, big calculation. This thing you have to also follow this thing. It will be coming out to 2l by 3. So I will write a note for this. हम लिख सकते थे यहाँ पर lying on the heavier side. If you have space very less, we will write lying on the heavier side. अगर हमारा space है तो how will write देखना. और तुम्हें कहीं भी लगेगा कि हमने ज्यादा लिख दिया है. Center of mass in x direction is 2l by 3.
which further away from the length of the rod. As we move away from the origin in x direction, linear density of rod increases, that is more mass on the same length, hence center of mass shifts toward the heavier side. समझ आ रहा है? हमने इस 5 लाइन में ये भी डिस्कस कर दिया कि लैम्डा जो गिवन है वो लैम्डा नॉट s by l है, राइट? If s is increasing, lambda is also increasing. If lambda is increasing, mass is increasing. So center of mass is shifting. So again, this is two way we can write it. Lying on the heavier side, if we have don't space, otherwise we can use this space to write down each and everything. Understanding everyone? And again, y तो 0 है और z भी 0 है, तो similarly फॉर्मूला लिखेंगे 0, फॉर्मूला लिखेंगे 0, क्योंकि कोऑर्डिनेट ही 0 0 है, हमने ऊपर लिखा है ना कोऑर्डिनेट्स s 0 0. So ultimately when it multiplies 0 0, but इससे फायदा क्या हुआ? एक तो completeness मिल गया आंसर में, सेकंड थोड़ा सा स्पेस यूज हो गया, तो दो पेज खत्म. थर्ड पेज we have, so we can write center of mass of the given rod in xyz is 2l by 3 0 0. अब इसमें बहुत जबरदस्ती का लिखा है हमने, बहुत जबरदस्ती का लिखा है, ठीक है? It is a one page question, one page क्या half page question, half page question को 3 पेज में एक्सटेंड करना, it's really tough. But how we can do that? We will write two things. First thing is the characteristics of center of mass based on the example. कुछ भी नहीं लिख दोगे. For example, it lie on the point line and plane of symmetry. X और Z क्या है? 0 है. It can be anywhere in the space, right? It lies on the heavier side, दिख रहा है ऊपर. Next, translational motion of the above rod can be analyzed by analyzing the center of mass. So ये थोड़ा जेनरिक से हमने क्या कर दिया, जेनरिक कैरेक्टरिस्टिक को उठाकर इंप्लीमेंट कर दिया इस वाले क्वेश्चन पे, और भी स्पेस बच गया. तो व्हाट वी आर राइटिंग अगेन, एप्लीकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो ऊपर लिखा था इसको मैंने यहाँ पे फिर से चिपका दिया. डू नॉट रिमेंबर मोर देन 3 एप्लीकेशन. इससे यार तो लिख नहीं पाओगे ना एप्लीकेशन. रिमेंबर ओनली 3 एप्लीकेशन, रिमेंबर ओनली 3 एप्लीकेशन किसी भी चीज का, उससे यार लिखने की जरूरत नहीं है. एनीवन डाउट है किसी को? Now a proton is 183 times heavier than an electron. Find the center of mass of hydrogen atom. Find the center of mass of hydrogen atom. सबको सेम है, राइट? ये तो कर लोगे ना. एक चीज क्या है यहाँ पे, मैंने क्या देखा है बाकी लोगों को, देखना. I have checked few question of the quantum interest student. They have written what? उन्होंने R नॉट की वैल्यू लिख दी है. पता होती है R नॉट की वैल्यू. Do not write any value. Here nothing is given, only 183 times heavier. So please be using, ये 5 मार्क्स का ही है, किसी एक के साथ शायद था ये, है ना? तो अंडरस्टैंड, प्लीज नॉट यूज दैट. सो इफ यू यूज, कहाँ चला गया this thing, it will come m2 by r. Again इसको एक्सप्लेन कर दो. m2 by m1 is this, so ultimately 0. Center of mass lying in the nucleus coinciding with the proton, coinciding with the heavier mass. Just more than sufficient. Do not do any extra. ठीक है? कितनों से यहां तक सारा क्वेश्चन बन गया था? Everyone? Please solve these questions. ठीक है? Very very important. ठीक है? Do not underestimate that. जो आसान क्वेश्चन है उसी में तुम्हें 7 मार्क्स लेकर आना है. जो टफ है उसमें तो नहीं ला पाओगे ना. Please try to understand things. Now coming to the uniform center of mass. Now, uniform solid hemisphere is nothing. If this is R, right, we have to find it. So what we can do, we can assume disk, these types of disk, that this hemisphere is made up of small disks. When they are taken together, it is forming the hemisphere. ठीक है? So what we have done, x पर जाकर हमने y पर जाकर dy का एक disk ले लिया है, right? Now this disk, I can write that what is will be dm, as it is uniform. This is the density m upon 2 by 3 pi r cube. ये तो वॉल्यूम होगा हेमिस्फीयर का, 2 by 3 pi r cube into pi r square dy. Pi r square dy is the volume of this one, pi r square dy at a distance y from the center of this. If you put it, it will come 3m r cube r square dy. कितना है ये? If you put it, it will coming out to 3m
r cube r square by dy. Now important is this r square can be written as, if you see this thing from this triangle, this is r, this is y, this is इस r को क्या लिख सकते हैं हम लोग, r square minus y square का root under. Put it here, it will be r square minus y square into dy. Just integrate it, right? Before integrating, I have also integrated x because x is 0 for element, so x center mass will be also 0. क्या टेक अवे है सेंटर ऑफ मास से, दैट व्हेन एनीवन आस्क्स यू सेंटर ऑफ मास, प्लीज फाइंड आउट ऑल द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है? सिमिलरली जेड सेंटर ऑफ मास विल बी 0. समझ में आ रहा है? इट्स अ 3D ऑब्जेक्ट, सो जेड सेंटर ऑफ मास विल बी आल्सो 0. नाउ कमिंग टू द y, 3m r cube r square minus y square dy, राइट? 3m, m से m खत्म, 3/2 r cube बाहर आ जाएगा, r square into dy into y into y, r square minus y square dy into y multiply r square y minus r cube. ये y क्या हो जाएगा, y square by 2, y cube क्या हो जाएगा, y 4 by 2. 0 से 4 डालोगे तो r 4 by 2 minus r 4 by 4. What it will be? r 4 by 4, r cube खत्म, 3r by 8. ये कितनों का आया था आंसर? In last 15 years, UPSC has asked the same question twice पूछा है उन्होंने. So center of mass of uniform hemisphere having base along xz plane and height along y is 0, 3. समझ में आ रहा है? This is the clarity, because UPSC has not given any sort of diagram here, so we have to explain our own diagram. ठीक है? Now again characteristics और application लिख दिया हमने. क्लियर है everyone? Now एक चीज जो तुम लोगों को मेरे साथ करना है अभी, फर्स्ट वी विल डू along it, ठीक है? उसके बाद काम करेंगे हम लोग. फर्स्ट रीड दिस क्वेश्चन. Read this question. What this question is all about? It is 25 marks. जब मैंने सोचा कि जब 25 मार्क्स है और 5 पेज गिवन ही था, है ना, तो मैं क्यों ना 6 पेज लेके इसका पूरा नोट्स ही दे दूं, so that if someone has not prepared their notes, they can use this notes as complete one. ठीक है? So we will calculate एक साथ, ठीक है? Something I have not calculated here that we will doing to go here. So what is a scattering? So first discuss the problem of scattering of charged particles. जिसको समझ में नहीं आता था scattering, please try to understand it from here and ask me. ठीक है? I will try to explain it. So scattering of charged particle is a type of collision in which particle do not change. ठीक है? The type of collision which is well elastic, it is mainly concerned with the deflection of the particle. This is the typical definition of any scattering. So scattering of charged particles we have defined here, okay, by a Coulomb field that we will see. Now hence obtain Rutherford scattering cross section, and what is the importance of our expression that we will do. Now take the case of Rutherford scattering where it was Coulombic repulsion between the projectile and the target. समझ में आ रहा है? जो भी क्वेश्चन लिखा था, we are decoding it first. So how do we, this diagram we are using with the target particle, projectile is there, deflection can be. If you have time, you can draw it. If you have time, ठीक है? मेरे पास time था, तो we are doing it. Now one thing is very important. In the last class, I have told you that write down intro, and if you have any compulsory assumption to write or major assumption to be made, कि उससे पहले तुम कुछ derive ही नहीं कर सकते हो, that has to be written along with the intro. Although it will be a very long introduction again, but 20% of this 25 marks is one page. ठीक है? So not worry about this thing कि पहले पेज में सिर्फ और सिर्फ ये लिखा हुआ है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. So first assumption is that all particles are treated as point object, right? So that their dimension doesn't matter here. Second, only Coulombic interaction are taken into account, right? अब यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि screening effect of electron is not taken. Screening effect of electron we are not taking here. We can write it, but we are not writing it. Why? Because that we will use in the conclusion.
जब हमारा ये आएगा टेंडिंग टू इंफिनिटी, देयर वी विल राइट इन दी कंक्लूजन, ठीक है। सो ओनली हाँ, so only Coulombic interaction are taken into account. If it is the Coulombic interaction, then Coulombic forces are central force. If it is central force, then it will have motion will be planar and angular momentum will be conserved. समझ में आ रहा है? ये एकदम क्लैरिटी मिल रहा है किसी भी इवैल्यूएटर को, वो टिक मारकर आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, इसलिए कंसीडर कर लिया। इलास्टिक कोलिजन, अब आगे तुम जो भी डिराइव करोगे बार बार इसकी जरूरत नहीं होगी। मोमेंटम इज कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, सो पी इक्वल्स टू पीएफ इक्वल्स टू पी, इफ बोथ ऑफ देम are conserved, we can use this, ठीक है। Now target nucleus is very massive. If it is very massive, there will be two things that will happening. कोई भी रिकॉइल नहीं होगा, मतलब टारगेट अपने जगह से हिलेगा नहीं, वहीं का वहीं रहेगा, बहुत मैसिव है। प्रोजेक्टाइल क्या कर लेगा, ये स्कैटर हो जाएगा, ओनली द प्रोजेक्टाइल विल स्कैटर। दिस टू implication will be there. Please raise your hand if you understand all the assumptions. Here we should not write any observation. Observation is not important here, ठीक है। Now let us consider the following case to determine the parameter of interaction. We have understood that कि Rutherford interaction तो करना है, but 5 पेज में क्या करेंगे, 5 पेज में क्या ही करेंगे हम लोग, ठीक है। अगर 4 पेज होता तो हम लोग क्या क्या नहीं करते वो मैं बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। सो ये जो मैं लिख रहा हूँ पेज नंबर 2 and 3 पे, that you can skip because I will be taking 6 pages to write this answer. Why 6 pages? I have already explained to you. 5 pages मिला था तो मैंने क्या बोला कि I am using 6 pages so that कि तुम्हारे पास एक complete notes ही हो जाए in form of answer, ठीक है। So what you can exclude that I will also tell you. So page number 2 ये जो लिखा है मैंने, और पेज नंबर 3 जो भी लिख रहा हूं मैं, this you can exclude। और देख लो मैंने एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ दिया हर जगह, एक्स्ट्रा स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेसेस, ठीक है। सो if you merge all these spaces, ये 5 पेज में आ जाएगा। Now coming to this one, so we have to define the parameter of interaction. One parameter of interaction is differential cross section area and second one is the impact parameter. To understand what we have to discuss, question में क्या पूछा है कि hence obtain an expression for Rutherford scattering cross section, right? What is the importance of above expression? It is directly asking cross section क्या आ रहा है Rutherford का, so we have to first derive that because we have pages and marks given. So what is differential cross section area? Please see the definition very, very carefully. Differential cross section area is the geometrical parameter which enables us to predict the probability of interaction at a particular direction. If it will be a total cross section area, it will be not particular direction but the total probability of interaction, right? Now consider अगर मान लो कि ये बहुत सारे पार्टिकल आ रहे हैं, ठीक है, और ये हमारा शीट है, थिन फॉइल शीट जो रदरफोर्ड में था, ये छोटे छोटे हमारे पास न्यूक्लियाई है। If they are coming and hitting it, what will happen? They will scatter in all possible direction. So let us understand, if I am considering this nuclei, right, all the possible direction it might scatter. So यहाँ पर बैठ जाएंगे डिटेक्टर लेकर, तो किसी भी एक डी ओमेगा इज व्हाट, माय सॉलिड एंगल, समझ में आता है सॉलिड एंगल सबको, 3D में एंगल जो होता है दैट इज माय सॉलिड एंगल। नाउ इन दिस सॉलिड एंगल इट इज अंडरस्टैंड कि डीएन पार्टिकल गया, कितना पार्टिकल आया, डीएन पार्टिकल। सो कैन आई राइट दैट कि जो डीएन पार्टिकल दिख रहा है वो डिपेंड करेगा इंटेंसिटी पे, नंबर ऑफ पार्टिकल दैट इज इंसिडेंटिंग। व्हाट इज इंटेंसिटी? इंटेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो जितना ज्यादा पार्टिकल इनकमिंग होगा उतना ही चांसेस होंगे उसके निकलने के। नंबर ऑफ टारगेट पार्टिकल पे डिपेंड करेगा, ज्यादा टारगेट पार्टिकल ज्यादा डिफ्लेक्शन, ये सुनो, एंड डी ओमेगा। सो इफ यू राइट इट, प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक कांस्टेंट को लेकर आते हैं। सो दिस इज व्हाट वी आर यूजिंग एज अ कांस्टेंट, दिस इज माय कांस्टेंट डी सिग्मा बाय डी ओमेगा, एंड इसी को हम प्यार से बोल रहे हैं आवर डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन एरिया। There is other way of writing this thing, sigma omega, or if you're writing in 2D, it is sigma theta and phi. So d sigma by d omega we have taken is at a constant geometrical property which is directly dependent upon the probability of scattering. If it is high, there will be more scattering. If it is low, there will be less scattering. This is what this line means.
Now, what assumption that we have made in differential procedure, that single target, single projectile and interaction is almost same for everyone. So this assumption you have to write in the examination also. ठीक है? Now, if NT is equals to 1, अगर number of target particle एक हो जाएगा, so sigma omega is coming out to be 1 upon I dn by. Now, understand, अगर यही क्वेश्चन 15 मार्क्स में आया होता, इतना जो भी हमने किया है यहां से लेकर यहां तक, ये कुछ भी नहीं करते, we will write down as we know that sigma omega is equal to this, where n is what, d omega is this, all these things. और ये लिखते फिर that sigma represent number of particles scattered per unit time, per unit scatter, per unit solid angle. ठीक है, per unit scatter मतलब nt is 1 बताया हमने, per unit time समझ में आ रहा हो तुम्हें, because it is talking about the intensity. So it is what, probability of finding the scatterer in d phi, जो हम यहाँ पर डिटेक्टर लेकर बैठे हैं, जो एंगल बना रहा है ये डी ओमेगा, इसमें कितना जा रहा है, यही प्रोबेबिलिटी बताता है कौन, दिस वन. व्हाट अबाउट इफ 10 मार्क्स, 10 मार्क्स में आएगा नहीं रदरफोर्ड स्कैटरिंग, ठीक है, अगर आएगा तो उसका कोई सब पार्ट आएगा, आया हुआ है, आई विल शो यू. ठीक है, अगर आएगा तो ये सब कुछ छोड़ दोगे, और अभी यहां से लिखोगे. यहां से लिखोगे अगर 10 मार्क्स का आएगा तो, यहाँ के बाद से. खैर 10 मार्क्स का कभी आएगा नहीं नॉर्मली. लेट अस अंडरस्टैंड नाउ. अब तुमने क्या डिफाइन कर लिया, दिस सिग्मा ओमेगा. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ये सिग्मा ओमेगा कैसे डिफाइन किया गया है, नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल के हिसाब से. ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि अगर एक टारगेट है और एक पार्टिकल है तो ये सिग्मा किस पे डिपेंड करेगा, राइट. सो इट डिपेंड्स अपॉन बी. बी इज व्हाट, पैरामीटर ऑफ इंटरेक्शन, इम्पैक्ट पैरामीटर, और मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दी व्हेन नो फोर्स इज एक्टिंग. समझ में आ रहा है, मिनिमम मतलब ये एट इन्फिनिटी हम लोग कहते हैं कि जब इन्फिनिटी पे होता है तो इसके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, तो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू एस, लेट्स से. सो अगर मान लो यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स आ रहे हैं, राइट, so number of particles coming through this area will be what, I equals to 2 pi into dB. ठीक है, 2 pi into dB. dB b. ठीक है, so इनकमिंग पार्टिकल इक्वल्स टू आउटगोइंग पार्टिकल. किसी को नहीं आता तो प्लीज पूछ लेना. आई एम अज्यूमिंग कि तुम लोग पढ़ कर आए हो और तुम बस सीख रहे हो आंसर राइटिंग कैसे लिखना है. ठीक है, so if दिक्कत है बताना. सो इनकमिंग पार्टिकल देख भी लो कितना होगा, विच इंसिडेंटिंग, आई इंटू 2 पाई इंटू dB, और जाने वाला कितना होगा, सिग्मा थीटा दिस. so if you do that it is coming out to be this one, right. now why minus sign here, you to understand that कि अगर b को और बड़ा करोगे, right, so theta will decrease. Why? Because if b is 0, theta will bounce what, theta is pi. And if b is very very high, b is very very high, infinite, so theta is what, 0. So there is a negative relation between b and theta. There is a negative relation between b and theta. So if beta is increasing, theta is decreasing, right. So for elemental ring, not ds, dB, we can write something like that, sigma theta equals to minus b sin theta dB by d theta. सुनो क्या किया हमने, फर्स्ट वी हैव एनालाइज कि इंटरैक्शन या स्कैटरिंग के लिए पैरामीटर क्या है, तो हमने बोला डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन एरिया. देन डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए पैरामीटर क्या है कि हाउ द पार्टिकल इज इंटरैक्टिंग, उसका पैरामीटर क्या है, p. एंड देन वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ b. Scattering and its direction depends upon b, which is a measurement of the interaction between them or forces involved in them. b किस पे डिपेंड करता है कि which kind of force acting on them. So now in our example, पहले वाले फिगर को फिर से बनाएंगे और लिखेंगे, if this is my target particle, if this is my projectile, if it has a direction pi, it will have pf also. pi and pf will be same because kinetic energies are same. So this small triangle I am making it pi pf same. अगर pi pf सेम है, बताओ वेक्टर से क्या करते हैं हम लोग, ये दोनों वेक्टर सेम, क्या ये एंगल अल्फा तो ये भी एंगल क्या होगा अल्फा, बिकॉज दीज आर पैरेललोग्राम, all fours are same, yes or no. So this is alpha and alpha, this is theta. So according to this what I can write,
2 alpha equals to pi or alpha is equals to pi by 2 minus theta by 2. First thing. Second thing, this is the interaction. F equals to 1 upon 4 pi epsilon naught 2 ze into 2e upon r square. यही तो फोर्स इन दोनों के बीच में, right? Why? Considering charge on projectile is 2e and target is ze. Now coming to this one, if you apply sine theta, sine rule here, if you apply sine rule here, what I can write? Delta p by sine theta. This is delta p, right? So delta p by sine theta is equals to p upon sine alpha or sine pi by 2 minus theta by 2. Sine pi by 2 minus theta by 2. That is delta p is coming out to be 2p sine theta by 2. 2p sine theta by 2. यहां तक कितनों को समझ आ गया है? प्लीज रेज योर हैंड. अगर डाउट हो तो पहले ये खत्म करो, उसके आगे बढ़ेंगे. अच्छा, can anyone tell me why I have written F here and delta P here? ऐसा नहीं होना चाहिए कि F और मोमेंटम की चेंज की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए. Why they are different? Anyone who could answer? When I have seen this thing for the very first time, मेरे पास ये डाउट आया था, यार फोर्स तो इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ये तो चेंज इन मोमेंटम डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा है यहाँ. Why? Anyone? अरे देखो यार, तुम लोग अगर डिस्कशन करने आ रहे हो तो दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो डाउट पूछो और दूसरा करके आओ सॉल्व, ठीक है? और अगर मैं पूछ रहा हूं तो ट्राई टू आंसर दैट इफ दिस इज डेल्टा पी, दिस इज एफ. तुमने तो यही पढ़ा है ना कि फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम, बट यहाँ तो इनके बीच में एंगल फाई है. क्यों? क्यों? एनीवन? अच्छा, कितनों को नहीं पता है? जस्ट रेज योर हैंड. कितनों को नहीं पता है, बस रट लिया था इसको? भाई एफ इस डायरेक्शन में है और डेल्टा पी इस डायरेक्शन में है. सुनो अच्छे से, देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड. डेल्टा पी is what? Delta P is change in momentum, that is average. पूरे जर्नी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग. PI और PF entire journey. What is this force? This force is instantaneous. अरे इम्पल्स पढ़ा है ना तुम लोगों ने? डेल्टा P is equals to what? Integration F dt. Yes or no? Where F and delta P is not in same direction. F equals to dp by dt. F in the direction of this elemental change of momentum, not of delta P. Everyone got it or not? Yes, no? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये तो किसी एक इंस्टेंट पे है ना, फोर्स तो चेंज हो रहा है. फोर्स इज व्हाट? लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स. फोर्स एट एवरी इंस्टेंट इज चेंजिंग, राइट? सो दिस इज व्हाट इट मीन. नाउ सो this is how we write the impulse f dt. So which f? जो उसके along है, f cos phi. Can I write this as dt by d phi into d phi? Now let us find out the value of dt by d phi. We know that angular momentum is conserved. What is the angular momentum initial? भाई इसकी mass m है, mass m और velocity v है. So what will be the angular momentum? mvv equals to at this time when it is at minimum distance. जब minimum distance में तो क्या हो रहा है? Deflect हो रहा है. That means rotating about at this instant. So it is equals to I omega. Omega is what? d phi by dt. So mvb equals to I omega. I is what? M square by 2. So what we can write? Omega. Omega और d phi dt क्या होगा? vb by r square. Putting this value in above, क्या हो जाएगा? f cos phi dt by d phi क्या लिखोगे यहाँ से? आर स्क्वायर बाई वी बी. पुट करो, आर स्क्वायर बाई वी बी कॉस फाई, सब कुछ है यहाँ पर. सो सब कुछ बाहर आ जाएगा. एंड व्हाट इज डेल्टा पी? 2mv sin थीटा बाई 2. यहाँ तो निकाला हमने 2p sin थीटा. व्हाट इज p? mv बाई sin थीटा बाई 2.
If you काटो इसको, B will be coming out to be Z E square 4E alpha into this. What is E alpha? E alpha is equals to this one. E alpha is equals to half mv square. Everyone clear? Now tell me, if B is equals to this, if B is equals to this, what will be this? Which is minus B sin theta. Sorry, solve it everyone. दो कुछ कुछ एक्सरसाइज में क्लास में करवाऊंगा हर बार. Solve it. Sin theta into dv by d theta. ये तो आसान क्वेश्चन है, ये तो सिंपल डेरिवेशन है. It should be on your fingertips. It should be on your fingertips. बताओ क्या आएगा? C by 2 अल्फा तो बाहर ही रहेगा, cot थीटा बाहर, राइट. इसका डिफरेंशियल क्या होगा? cot का क्या आता है? अरे cot का cosec square. तो आई कैन राइट, एक माइनस आ जाएगा तो C by 2e अल्फा cot थीटा by 2. ठीक है, एक माइनस था पहले से, एक माइनस cosec का आएगा, सो वी आर एडिंग इट into C upon 2e alpha into cosec why it is not working. सॉल्व करो, सॉल्व इंस्टेंटली. एग्जाम में तुम्हें एक ही मिनट में सॉल्व करना है इस चीज को, बिकॉज इट्स अ डेरिवेशन. यहां से यहां नॉट मोर देन 1 मिनट. सो इट इज cosec स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू हाफ अपॉन साइन थीटा को क्या लिख देंगे हम लोग? साइन थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 2 sin theta by 2 into cos theta by 2. So here sigma theta is equals to c square upon 16 e alpha square cosec 4 theta by 2. I have written more pages in this question just to complete this topic. तो यही इसी क्वेश्चन से तो पूरा टॉपिक खत्म कर लो. ठीक है, हाँ ये सब विषय. ठीक है, नाउ इंटरप्रेटेड, ये तो निकालना था, इसके बाद हम लोग निकालेंगे. So we can say that here first sigma theta will increase if kinetic energy of the projectile will increase. So you can use sigma theta is decreased. Decrease. Second thing you can write also, sigma theta will be more for higher order, higher atomic number element. अब इसीलिए तो हमने लिया था गोल्ड को. ठीक है, गोल्ड वाज व्हाई एग्जांपल गोल्ड. गोल्ड को हम लोग बहुत थिन शील बना सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मेलिएबल, है ना. एंड फॉर दिस स्कैटरिंग, फॉर अ हायर स्कैटरिंग टू अकर, वी नीड दैट. सो बोथ ऑफ दैट you can write it. Also third thing, as theta increases
सिग्मा थीटा डिक्रीजेस। ठीक है, अब जो मैं ग्राफ बनाकर दे रहा हूं तुम्हें, ठीक है, नाउ मेकिंग द ग्राफ फॉर यू, दिस ग्राफ इज एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, ये मैक्सिमम कब आती है, एनीवन, कोई बता सकता है मुझे, व्हाट इज दिस पॉइंट? What this point is? Theta equals to 60 degree. Theta equals to 60 degree. No. ये तो differential cross section area था. What will be total cross section area? Now, sigma total cross section. What we can write? It is integration of sigma theta 2 pi sin theta d theta, right? Which is coming to be infinite, which is coming to be infinite. अब इसी को इंटरप्रेट करना था, why it is coming to be infinite. You can put it and solve it, although no solving is required here. ठीक है, so why infinite? So because it has some limitations. It has some limitations. First, what are limitation is thing that Coulombic interactions are distance dependent. So even if you go very, very farther away, it will be acting. Okay. So you cannot be certain at which point of time it becomes zero. So Coulombic interactions are distance dependent. And second is that we have not considered limitation. We have not considered the screening effect of electron. Screening effect of electron. Now understand, देखो, this page यहां से from here mark कर लो जहां भी तुम्हारे पास हो, from here to here you are having almost 2 pages, almost 2 pages. So if it is asked for a 10 marker, you can do it in 10 pages just by writing this above definition and those 2 pages. 10 marker, 15 marker, same thing, you write all same thing, बस थोड़ा सा फैला कर लिख लोगे. So if it is asked for 15 marks, just add this impact parameterologies. If it is asked for 20 marks, you have to write all those things. इसी इतने चीज को मर्ज करना है. What you can skip, this you can skip, this you can skip, this is not required. समझ आ रहा है? This is not at all required because I know that कि 25 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं पूछने वाला यूपीएससी. क्या पूछेगा वो? 20 मार्क्स. So this complete page you can skip and you can just use this result. This, so ये एक 1.5 पेज जो है तुम्हारा पूरा का पूरा बच जाएगा. समझ में आ रहा है? So you will, UPSC will ask for 20 marks for 4 pages. That's why I have written in 6 pages कि मुझे 2 पेज हटा के दिखाना है यहाँ से. Are you getting it? According to the अभी का trend. These assumptions are very very important to write. And last में जो हमने conclusion लिखा है, screening effect और action distance, these are very important. This graph is very very important, right? This conclusion is very very important. तो बाकी चीज तो है ही. ठीक है? Everyone, any doubt in Rutherford scattering? Then we'll move to the next question. बाकी क्वेश्चंस तुरंत हो जाएंगे. Any doubt in Rutherford scattering? ऐसे भी किसी को डाउट हो तो आ जाया करो. ठीक है? Now, before coming to this question 54, let me tell you अभी हम लोग कितना क्वेश्चंस कर रहे हैं. So we are doing questions 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So I think it's 9 question. 9 क्वेश्चन अभी कर रहे हैं हम लोग.
डेली वी विल बी सॉल्विंग 9 to 10 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस है हमारे पास? ऑलमोस्ट 550 क्वेश्चंस है 10 साल में, इतनी है ना। एंड हमारे पास डेज भी इतने ही है, ऑलमोस्ट 60 डेज है, 3 से स्टार्ट किया था तो ऑलमोस्ट 60 डेज है हमारे पास, जुलाई एंड अगस्त को लेकर, है ना। सो डेली 9 to 10 क्वेश्चन, इवन योर क्लासेस विल बी ऑन सैटरडे एंड संडे, डेली 6 PM, ठीक है। इवन इफ आई एम नॉट मेंशनिंग एनीवेयर, डेली एट 6 PM प्लीज ज्वाइन दिस क्लास, ठीक है। अगर तुम लोग ज्वाइन करोगे तभी ये मोमेंटम होगा, नहीं तो पता ही है इट्स अ फ्री कोर्स, है ना। इफ यू विल नॉट कोऑपरेट, मेरे लिए बंद करना आसान हो जाएगा, है ना। नाउ कमिंग नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे? एप्लीकेशन रोटेटिंग फ्रेम, दैट इज 17 18, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, राइट। देन टू बॉडी प्रॉब्लम, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 7 8 9 10, ठीक है। सो these two things, two body problem, reduce mass, motion under central force and this, इसमें कोई भी डाउट हो, पढ़ना, डाउट लेकर आना नेक्स्ट क्लास में, और इसको सॉल्व जरूर कर लेना। जो लोग डी सेट सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो ये प्लीज ये नॉर्मल 10 क्वेश्चन डेली करें, जितना कम से कम डेली एक्सप्लेन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास वी विल बी डूइंग टिल क्वेश्चन नंबर 26, उसके बाद हम लोग 27 से आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सारे क्वेश्चंस एक जैसे हैं, सारे क्वेश्चन दैट दे हैव आस्क्ड इज लाइक, तो ये क्वेश्चन लोग पूछ रहे थे कि हाउ यू हैव टू राइट इट। कितनों का ये नहीं बना था क्वेश्चन? ड्रॉ एन नीट डायग्राम टू एक्सप्लेन द स्कैटरिंग ऑफ एन इंसिडेंट बीम ऑफ पार्टिकल बाय अ सेंटर ऑफ फोर्स। दे आर आस्किंग नथिंग, सुनना चाहिए से। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू देयर इज एन वे ऑफ डूइंग थिंग्स, दिस थिंग, ठीक है। फर्स्ट मैंने क्या बताया था? फर्स्ट इज स्कैटरिंग, देन वी विल फाइंड आउट इट्स पैरामीटर। What people has done, few people, क्योंकि जो लोग भी टेलीग्राम पर कॉपी भेजते हैं मैं उसको एक बार देख लेता हूँ, सबकी क्वांटम योद्धा वाले बच्चों की भी विद इन अ मिनट और टू, ठीक है। स्क्रॉल करके देख लेता हूँ क्या लिखा है उन्होंने। तो आई हैव फाइंड इट कि लोगों ने रदरफोर्ड स्कैटरिंग लिखा है। इज रदरफोर्ड स्कैटरिंग नीडेड हियर? तुम्हें बस दिखाना है कि एन इंसिडेंट बीम ऑफ पार्टिकल क्या है, जो हमने पहले लिखा था रदरफोर्ड में, जो वहां के लिए बहुत रिलेवेंट नहीं था, वो यहीं के लिए रिलेवेंट है, ठीक है। और मैंने पहले इस क्वेश्चन को लिखा था और फिर इसको कॉपी पेस्ट वहां पे कर दिया है। So scattering the type of collision, you do that. This is what? This is the n incident particle, which is, ठीक है। So all those things you can write it, जो हमने ऊपर पढ़ा है, same thing, assumption of different cross section area, all these things, ठीक है। Next what you will do, you will find out parameter B, and now you will write scattering and its detection depends upon S, which is a measurement of interaction between the force। जब आप हमें फोर्स देंगे कि किस फोर्स का इंटरेक्शन है भाई। अब लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मैंने देखा है क्वांटम योद्धा वाले बच्चों को बता रहा हूँ जिनकी मैं कॉपीज देख ले रहा हूँ। सम ऑफ स्टूडेंट हैव रिटन सेंटर ऑफ फोर्स है। क्या ये सेंट्रल फोर्स है? क्या ये सेंट्रल फोर्स है? ये सेंटर ऑफ फोर्स है। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। क्या ये रदरफोर्ड वाला है, कोलंबिक है? नहीं है ना कुछ भी। तो प्लीज कुछ भी मत लिख कर आओ। यू जस्ट हैव टू टेल कि ओके आई कैन एक्सप्लेन दिस स्कैटरिंग ऑफ इंसिडेंट बीम पार्टिकल which can be defined using the impact parameter and impact parameter depends upon B। आप मुझे B दो, मैं तुम्हें ये बता कर दूंगा। यूपीएससी has asked one times, they have given B की वैल्यू cot square theta by 2 और find out the impact parameter। अभी नहीं, 2010 के आसपास में पूछा गया है ये क्वेश्चन। हैव यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, यस और नो? ये क्वेश्चन को कैसे लिखना समझ में आ रहा है? इट इज आस्क्ड फॉर ओनली फॉर 10 मार्क्स यार, अंडरस्टैंडिंग और नॉट, ठीक है। प्लीज अटेम्प्ट द क्वेश्चन, व्हेन यू अटेम्प्ट इट यू विल अंडरस्टैंड कि क्या गड़बड़ी आ रही है, क्या लूप होल है, ठीक है। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, 15 मार्क्स का, 15 मार्क्स लिखना चैलेंज है इसमें। 15 मार्क्स, ये तुम एक डायग्राम बनाओगे, आई इनकमिंग बराबर आउटगोइंग और काम खत्म। इनकमिंग बराबर आउटगोइंग और काम खत्म हो जाता है, ठीक है। बट व्हाट यू हैव टू डू इन 3 पेजेस, अगेन सेम चीज आई हैव रिटन हियर, जो ऊपर करवाया है वहां से लेकर आओगे एंड देन इट विल बिकम 3 पेजेस। अब क्या होगा, यहां पर जब खत्म हो जाएगा तो अब इसमें तुम्हारे पेजेस बच रहे हैं, इससे पहले पेजेस नहीं बच रहे थे तो कुछ नहीं लिख रहे थे। अब क्या लिखेंगे? अब वी विल राइट द एयर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे 2 चीज आया है, क्रॉस सेक्शन और इंपैक्ट पैरामीटर, देन वी विल राइट द एप्लीकेशन। देखो कब लिख रहे हैं, जबरदस्ती हर क्वेश्चन में लिख रहे हैं, जिसमें स्पेस बच रहा है बस उसमें लिख रहे हैं।
What is the application of impact parameter? It determines distance of close approach in nuclear scattering, Rutherford scattering में. For example, calculating trajectory of celestial bodies during the close encounters, right? Distance of close approach के हिसाब से ये भी उसी का example है, but slightly different. Simulates collision and interaction at the atomic level. Simulates collision, that means it is something which is interaction dependent. Impact parameter has a great impact because it tells you कि what type of interactions are involved. अरे b को देखकर b की वैल्यू भी आई थी ना, cosec स्क्वायर b की वैल्यू आती है कोई कांस्टेंट cosec स्क्वायर थीटा बाई 4, सब समझ जाते हैं कि किसकी वैल्यू है, ये रदरफोर्ड स्कैटरिंग की है. So based on the b you can find out कि which type of interaction is there. Next question में I will explain it more how b will help you. What is differential cross section area? It helps in subatomic particle. अरे सब तो स्कैटरिंग करवा करवा के हमने डिस्कवरी करवाया है, न्यूट्रॉन का, न्यूक्लियस का, क्वार्क्स का. ये सुनो, helps in low energy physics like solid state में x-ray scattering, Black's law, neutron scattering. This is how you can integrate your own syllabus in your answer writing. Everyone done? Any doubt? Any doubt? ठीक है. Daily we will not take more than 1 hour, है ना. अभी कितना हो रहा है, 7:11 हो रहा है. ठीक है, थोड़ा सा टाइम हो गया, but we will wind up in 2 minutes. Show that the cross section of elastic scattering of point particle from infinitely mass is r square by 4. Now in hard sphere scattering we have seen these things, but it is one of the implication of hard sphere scattering. अब यहाँ पे मत करने लगा ना कि दो, मैंने देखा लोगों को दो लेकर कर रहे हैं r1 r2 और फिर कर रहे हैं. नहीं करो यार. अगर तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है कि एक मैसिव पार्टिकल और एक पॉइंट पार्टिकल है, तुम सीधा लिखो ना r. मैं क्या बोल रहा हूँ समझो, कि अगर तुम्हें ये यूज करना है तो तुम सीधा पॉइंट लिखो ना. इट विल बी r, इट विल बी b. ये ट्राइंगल क्यों इसको r1 प्लस r2 करके फिर r2 को r करना और r1 को 0 करना? नॉट रिक्वायर्ड. प्लीज नॉट डू एनी इररिलेवेंट मैथमेटिकल स्टफ. ठीक है, उससे लगता है कि क्लमजी नेचर है तुम्हारा. ठीक है, तुम क्वेश्चन समझ ही नहीं पाए. जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है तुम उसी को फिट करने की कोशिश कर रहे हो. ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड फ्रेम अकॉर्डिंगली. तो टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया, देखो, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्कैटरिंग इज द ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी. ऑलवेज रिमेंबर, दिस ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी कांस्टेंट है, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है. Mutual interaction which deals with the condition probability of their interaction. Mathematically it is given as sigma theta 2 pi sin theta d theta. ठीक है. Now elastic scattering of a point from the infinite massive, that is no change in position of sphere require deflection of the particle. जो ऊपर लिखा था उसी को मैंने लिख दिया. यहाँ पर हमने क्या किया है, फिर से इम्पैक्ट पैरामीटर डिफाइन करोगे ऑलवेज. ये तो डेरिवेशन सब में करना है, जो पूछे थे ना ऊपर कि सर 10 मार्क्स में क्या करेंगे रदरफोर्ड में, तो इतना तो सबके लिए कॉमन है. इसके बाद आएगा कि कौन सा स्कैटरिंग हो रहा है, रदरफोर्ड स्कैटरिंग है, हार्ड स्कैटरिंग है, या फिर ये है. तो बेस्ड ऑन बी विल बी डिफरेंट. तो देखो यहाँ पर क्या होगा, इफ दिस बॉल इज कमिंग एंड मीटिंग डाउन हियर, तो ये रेडियस r, ये b और ये कुछ भी होगा, क्या फर्क पड़ता है. सो हियर यू कैन राइट एट b इक्वल्स टू r sin थीटा. अगेन अल्फा इज इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा बाय 2. अल्फा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2. ठीक है, जस्ट पुट इट हियर. ये तो आसान है. b क्या b डिपेंड कर रहा है इंटरेक्शन पे? सुनो, दिस इज द ओनली थिंग जो एग्जाम लिखना है. b डिपेंड्स अपॉन इंटरेक्शन. probability of scattering, that is sigma theta, depends upon b, and total probability sigma depends upon sigma theta. This is the hierarchy that you have to understand. ठीक है, अब तो कैलकुलेशन है. माइनस b बाय sin थीटा cos थीटा करोगे, r square by 4 is your answer. So what will write? Differential cross section area is given by r square 4. Now कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें टोटल निकालना स्टार्ट कर देते हैं. भाई टोटल पूछा गया तुमसे? नहीं पूछा गया ना. फालतू सुनना अच्छे से. दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमने नोट्स में क्या किया है, अगर तुम देख रहे होगे तो हमने टोटल भी निकाला बाद में, बट यहां पर पूछ रहा है r स्क्वायर बाई 4. टोटल निकालने नहीं बोल रहा है. तो अगर तुम लास्ट में टोटल निकालोगे तो इट माइट क्रिएट अ कंफ्यूजन. ठीक है, तो प्लीज डू नॉट राइट विच इज नॉट आस्क. ठीक है, प्लीज नॉट राइट विच इज नॉट आस्क. प्लीज राइट समवेयर कि जो चीज नहीं पूछा गया उसको निकालने की जरूरत नहीं है. जो पूछा गया है उसको ही निकालेंगे, उसको अच्छे से इंटरप्रेट करेंगे, उसका और रेलिवेंट चीज लिखेंगे, बट जो नहीं पूछा गया उसको लिखेंगे नहीं.
So what is R square A4? It is just an area term which is just a geometrical property. R square A4 depend upon radius. ठीक है? Assuming interaction, it is always constant and independent of the mass and speed of projectile. देखो, this is very important. Geometrical property तो बोल दिया हमने, but it is independent of the mass and projectile. कितने भी जोर से फेंक दो, this will be the interaction. And third, based on this, you can write that higher or larger the radius, greater will be the probability of interaction. Greater will be the probability of interaction. ठीक है? Understood everyone? Understood everyone? चलो, giving you 2 minutes. Any doubt if you have, just ask me. कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से, ask me. Just revising it. Though I'm telling you, though these are free classes, 60 days free. We are covering 10 years PYQ, daily 10 questions, right? Also analyzing the PYQ, how the PYQ is evolving. Plus, I am taking your doubts. Even in the conceptual part. तो अब अगर जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कोचिंग, they should also get benefited from this one. ठीक है? Please try to attend classes and देखो again सही चीज है. If you cannot afford it, these 2 months, please try to utilize it maximum. Trust me, you will be on a next level. How many of you are thinking कि थोड़ा थोड़ा आंसर राइटिंग समझ में आ रहा है अच्छे से? देखो, ये लाल पीला हरा करने में मजा आता है फिर, अगर तुम लोगों को लगता है कि हाँ समझ में आ रहा है बाकियों को. बाकी जनता, 2-4 लोग कुछ छोड़ के बाकी जनता, you can comment or you can raise your hand also. Okay, so I am tomorrow at 6 p.m. we will meet. ठीक है? Please use the website to join it. I might not be sending the link on the Telegram. ठीक है? वो अच्छा नहीं होता है. हाइड्रोजन एटम किसकी बात कर रहे हो? क्वांटम मैकेनिक्स? सैम, यार क्यों परेशान हो? हाइड्रोजन एटम आया है क्या पिछले? मैं बोल रहा हूँ 15-20 मार्क्स से ऊपर नहीं आएगा. जब क्वांटम मैकेनिक्स करेंगे वहां भी कर लेंगे. तो प्लीज डू नॉट, मतलब इस तरीके से मत पढ़ाई करो कि मैकेनिक्स पढ़ रहे हो तो क्वांटम मैकेनिक्स याद आ रही है. ठीक है? जब मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, मेक श्योर यू नो एवरीथिंग अबाउट दिस थिंग. जब वहां आएंगे बताऊंगा मैं कैसे याद करना और 10 मार्क्स में एग्जैक्टली कितना लिखना है, क्या लिखना है. ठीक है? सो प्लीज स्टेप जंपिंग इन क्वेश्चन. विच क्वेश्चन? एवरी क्वेश्चन आई एम टेलिंग यू कितना लिखना है कितना नहीं लिखना है. आई एम एग्जैक्टली राइटिंग द मॉडल आंसर. स्टेप जंपिंग मीन, जिष्णु एक बार एक्सप्लेन करोगे? क्वांटम मैकेनिक्स जब आएगा तो बताऊं, मैं तो बताऊंगा कि तुम्हें हाइड्रोजन एटम एग्जैक्टली कैसे याद करना और कितना लिखना है. ठीक है? आई विल एग्जैक्टली टेल यू. रदरफोर्ड बताया ना जैसे कि 10 में कैसे लिखोगे, 15 में कैसे लिखोगे, 20 में कैसे लिखोगे. सेम आई विल बी टीचिंग यू देयर आल्सो. जिष्णु, व्हाट, टेल अबाउट स्टेप जंपिंग इन क्वेश्चन. देखो, at every question I'm telling you how much have to write. One thing that I have also told you in the last class, that mug up all derivation. Mug up, रट्टा मारो हाथ, मतलब it should be on your fingertips. ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन, अरे डिस्कस कर लेते हैं. दोज हु डोंट हैव एनी डाउट दे कैन लीव. जिष्णु आ जाओ. देखो फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, क्या एक्स्ट्रा लिखा है तुमने? देखो, मतलब 8th वन ना 9th. ओके,
चेक कर लो एंड अगेन डेली वी आर मीटिंग ऑनलाइन, तो अगर डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। चलो दैट्स ऑल। देखो प्लीज राइट इट फर्स्ट एंड देन अटेंड द लेक्चर प्लीज, इट विल हेल्प यू। ट्रस्ट मी, मॉडल आंसर देखने के बाद अगर लिखोगे तो उतना नहीं चमकेगा, खुद से लिखोगे उसके बाद मॉडल से लिखोगे तो फिर गैप समझ में आएगा कहाँ पे दिक्कत है, ठीक है। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम 6 PM। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।